Oh, hi guys, what's up? Welcome back. I am Shiv Virmani, Indian medical student, author of the book Pharmacy, and we are back with the ANS. We should be doing this topic after general pharmacology, but there were requests that please start antibiotics. So, after general pharmacology, we have done the एंटीबायोटिक्स वाला पार्ट. देन हमने ऑलमोस्ट फार्माकोलॉजी के हर चीज कवर कर ली, बट ANS was left, and ANS is the base, and it was only left. So today we are starting with ANS. Done the antibiotics वाला part, then हमने almost. So guys, I hope that आवाज सही आ रही होगी, है ना? आवाज़ इज़ फाइन. सो अगर कुछ भी नॉइस आए या कोई भी ऐसे ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है देन बता देना. आज मैंने माइक यूज़ करा है, सो मैं उस माइक को थोड़ा से चेंज कर दूंगा, ठीक है? सो वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट लुक एट द लाइव चैट एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द थिंग्स. वेयर इज Yeah. So hi guys, welcome back, welcome to Unacademy. I am Shiv Virmani, and I have given my intro, but again, so tolerate me. So guys, हमने फार्माकोलॉजी को हर चीज़ पढ़ चुके हैं, एंड आज हम फाइनली कोलिनर्जिक सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं. सो इन स्टार्ट हम कैसे करेंगे? स्टार्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द सिंथेसिस. देन फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन किसकी वजह से हो पाता है? एसिटाइलकोलिन. फिर एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, देन रिसेप्टर्स कैसे एक्ट करते हैं, एंड देन ड्रग्स वगैरह डिस्कस करेंगे, एंड मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स कौन से हैं, राइट? सो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. पिछली कुछ क्लासेस में उतना अच्छा स्लाइड्स नहीं बना पा रहा था मैं, बिकॉज एज सच थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बट बाकी तो सब कुछ सही है. लेकिन पीपीटी में जो पहले मैं डिवोट कर सकता था टाइम, वो थोड़ा सा कम डिवोट कर पा रहा हूँ. सो उसके लिए आई एम सॉरी. और अगर आपकी कुछ डाउट हो तो हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी कर लेंगे. सो इट इज़ फाइन, राइट? देन before starting our main topic, first of all I want to tell you that I am currently doing a plus course, and the topic of the plus course is the drugs affecting endocrine glands, right? So the hormonal drugs basically. So this course is of 8 days, and it is already started. It was its first session was on 15th November. So this was the Diwali gift for you all guys, so that's why I thought that 14 से start करते हैं, but 14th में all of the students were saying Diwali. So I thought that 15 से करते हैं. 15 was I hope that 15 was Sunday. So from Sunday we have started this course, and this is a 8-day course, and basically a 9-day course. So it is having 8 sessions of 60 minutes, right? And it has been started from 15th November, and it will be ending on 22nd November. And on the 23rd November, I don't know what is the day, but on 23rd 8 p.m. there will be quiz, right? 8 p.m. there will be quiz. So wait a second. So I hope that you all will love that plus course, and short crisps and अच्छा सा है, so you can attend, right? और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है then आप benefited हो already, right? You can attend, right? So welcome to Unacademy, the top online learning platform. It is a single platform, right? So how to download the Unacademy app from the Play Store or App Store? ये तो चीज़
even आजकल तो इनफैंट कोई पता होगी, so you have to write Unacademy on App Store or Play Store, and it is free, so you can right away install it and use it. So अब आपको ये तो डाउट होगा कि यूज़ क्या कहाँ की यूज़ करेंगे, बिकॉज it is having a H plus subscription, iconic subscription and all of that. So how can we use it for free? So there are many special classes, free special live classes that are ongoing on each and every topic, and these special classes are taken by the top educators, right? So, and you can ask your queries, right? So that's why it is beneficial. So even if you don't want to buy the subscription, then you can use this special free classes and you will be benefited with this, right? And then there is two choices for a NEET PG aspirant: plus course and iconic course. Iconic course is basically the collaboration of Unacademy and Prep Ladder. So first of all, let's talk about the plus course. On plus course, there are live classes. You can attend live classes, then you can take live tests, live quizzes, then you can enroll into batch courses, right? And then you get the structured schedule, and I think that's what is needed. You need a structured schedule because you can pass the exam, but अगर आपको top पर आना है, then you need a strategy. You need a deadline that कौन सी डेट तक, कौन से कितने टाइम में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, राइट? और आपको ये चीज़ कोई नहीं बताता, Unacademy बताता है, राइट? सो दैट्स व्हाई Unacademy is really beneficial. Then let's talk about the iconic course, that is the collaboration between the Unacademy and Prep Ladder. So with Unacademy के साथ आपको सारे के सारे ये वाले तो फीचर्स मिलते ही मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, बट प्रेप लैडर के वीडियो लेक्चर्स, क्यू बैंक, रैपिड रिवीजन कोर्स एंड हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, राइट? सो दैट्स वाई इफ यू आर अ सेकेंड और थर्ड ईयर मेडिको और MBBS स्टूडेंट, देन आई वुड सजेस्ट you to buy Iconic course. And if you want to buy, then you can use the code VIRMANI Virmani, and you will be getting 10% off, right? Then now let's start the cholinergic system, that is the base of pharmacology and the most interesting and the easiest topic of pharmacology, and I feel that it is the most interesting and the easiest topic. अगर आपको नहीं लगता, but I believe that it is easiest topic of pharmacology. I want to check the audio, so guys please wait for few seconds because I think there is so much of hissing sound that is coming. I think it's fine, no problem. So let me just keep this mic on let me just put this mic on my collar. So guys, now I think it's fine. Yeah. Yeah, now it's fine. I'm really sorry अगर आपको दो बार ये चीज़ सुननी पड़ी हो, because ऑडियो अगर अच्छा ना हो then you will not like to watch the session further. So आप बंद करोगे, चले जाओगे, dislike मार के चले जाओगे. So I don't want any such things. So guys, before starting cholinergic, you need to understand the two things, right? First is the sympathetic system, and the second is the parasympathetic action, right? So sympathetic action is the
or sympathetic actions are the actions that are produced by your body when you are in a risky, dangerous situation. And thus we call the sympathetic system as fight and flight system as well, right? So sympathetic system is also called as fight and flight system. So imagine कि आपके सामने शेर आ गया, right? And you are not a Spider-Man, right? So आप क्या करोगे? आप एक नॉर्मल कॉमन इंडिविजुअल हो, आपके सामने एक शेर आ गया, आपके पास कोई सुपर पावर नहीं है, आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो क्या होगा आपके साथ? आपका बीपी बढ़ेगा, आपका स्वेटिंग स्टार्ट होगी, राइट? आपकी जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको भूख लगी है या आपको डिफिकेशन रिफ्लेक्स आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, जीआईटी रिफ्लेक्सेस अबॉलिश हो जाएंगे, राइट? आंखें आपकी फटी की फटी रह जाएंगी, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगी, राइट? और ब्रोंकस जो है आपका, उसको ज्यादा एयर चाहिए होगी तो आपकी वो डायलेट हो जाएगी, एंड जो ब्लड वेसल्स हैं अराउंड मसल्स वो डायलेट हो जाएंगी, बिकॉज योर मसल विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सो दैट यू कैन रन और यू कैन फाइट. दो चीजें होती हैं, या तो आप शेर से फाइट करोगे या आप डर के भाग जाओगे, फ्लाइट करोगे. फाइट तो आप कर नहीं सकते, करना फ्लाइट ही पड़ेगा आपको. सो आपकी मसल्स के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं दैट विल बी, उनकी डायलेटेशन हो जाएगी सो दैट योर मसल्स विल गेट हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो ताकि आपकी मसल इजीली फैटीग ना हो, राइट? देन आपकी जो स्टमक के आसपास ब्लड वेसल्स हैं या जीआईटी के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं उनका क्या होगा? जीआईटी के आसपास वाली ब्लड वेसल्स विल कॉन्स्ट्रिक्ट. ये कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों होंगी? बिकॉज हमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड मसल्स तक पहुंचाना है. दैट्स व्हाई द ब्लड वेसल्स अराउंड जीआईटी विल कंस्ट्रिक्ट, राइट? एंड नाउ सिंपैथेटिक की हमने बात कर ली कि आप इमेजिन कर लो यार कि आपके सामने एक शेर आ गया और क्या क्या सिचुएशन होगी. सारी की सारी सिचुएशन आपको एकदम से याद हो जाएगा सिंपैथेटिक सिस्टम. देन लेट्स डिस्कस अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक और रेस्टिंग सिचुएशन. सो दिस इज अ रेस्टिंग सिस्टम. सो जब आप रेस्ट करते हो तब ये एक्टिवेट होता है. जब आप रेस्ट करते हो तो एज सच आपका बीपी नहीं बढ़ा होता, बिकॉज योर बॉडी डजंट वांट एनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. ऑक्सीजन डिमांड इज ऑल्सो नॉर्मल एंड सप्लाई इज ऑल्सो नॉर्मल. सो बीपी क्यों बढ़ेगा, राइट? एंड व्हाई इट इज ऑटोमेटिकली doing the things. So let me just erase the slides first, then we'll be discussing the why it takes so much long and why the animation is starting on its own. Wait, yeah, I have not asked you to please start your animation. Yeah, now we can start. So now comes the parasympathetic system. So parasympathetic system is activated when you are at rest. When you are resting, then your BP is also low, normal. Your bronchus is also constricted because you don't want any excessive oxygen supply. So why your bronchus will dilate, right? And your stomach activities will be on its peak, secretions will be on its peak, digestion will be on its peak, you will be feeling defecation reflexes and all of that. And right, so इतना हमने एक नॉर्मल सा डिस्कस कर लिया. एंड योर प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा बिकॉज एज सच रेस्टिंग पोजीशन है, आँख कैसे डायलेट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? सो हमने कॉमन इफेक्ट्स देख लिए सिंपैथेटिक के एंड पैरासिम्पैथेटिक के. एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल मस्ट नो दैट देयर आर 4 थिंग्स
कॉलिनर्जिक है एक, सबसे पहले कॉलिनर्जिक, सेकेंड इज एंटी कॉलिनर्जिक, देन एड्रेनर्जिक, and the fourth one is anti-adrenergic, right? First of all, cholinergic system stimulates the parasympathetic system. सो कॉलिनर्जिक सिस्टम का मतलब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम आपका स्टिमुलेट हो रहा है, एंटी कॉलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम आपका ब्लॉक हो रहा है, एंड whereas adrenergic means the stimulation of sympathetic actions, right? And anti-adrenergic means abolition of sympathetic system, right? So cholinergic में जो भी होगा वो सब पैरासिम्पथेटिक वाली एक्टिविटीज होंगी, और जो भी आपका एंटी कॉलिनर्जिक में है वो पैरासिम्पथेटिक को ब्लॉक करेगा, तो क्या एक्टिविटीज दिखेंगी? सिंपैथेटिक एक्टिविटीज दिखेंगी, राइट? और एड्रेनर्जिक के अंदर भी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज दिखेंगी, बट एंटी एड्रेनर्जिक के अंदर इट विल बी एबॉलिशिंग द सिंपैथेटिक सिस्टम. सो सिंपैथेटिक का एक्टिवेशन नहीं होगा, पैरासिम्पथेटिक वाली एक्टिविटीज दिखेगी. मतलब कि इफ वी वांट टू गिव एंटी एड्रेनर्जिक टू अ पेशेंट, सो उसका बीपी कम हो जाएगा, राइट? बीटा ब्लॉकर्स, मतलब वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, 9 PM वाली क्लास में. 9 PM वाली क्लास में हम एड्रेनर्जिक डिस्कस करेंगे. एंटी एड्रेनर्जिक इज स्टिल नॉट शेड्यूल्ड, सो वी विल बी हैविंग एंटी एड्रेनर्जिक टुमारो. सो कॉलिनर्जिक, एंटी कॉलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक. सो बेस हमें पता चल गया, और आज हम कॉलिनर्जिक करेंगे. हम पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलिनर्जिक को कौन ट्रांसमिट करता है? कॉलिनर्जिक एक्टिविटीज किसकी वजह से होती हैं? So there is a transmitter that is called as acetylcholine, and this is the only transmitter जिसकी वजह से cholinergic होता है, right? So let's start. Our intro is over. फटाफट से start करते हैं, right? And आज काफ़ी टाइम बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा टॉपिक है एंड समझाने में मज़ा आता है. So welcome to the cholinergic drugs. Right, so this we have already discussed that if you see, or if lion comes in front of you, then क्या होगा? आपका sympathetic activation होगा, बट आप जब रेस्ट कर रहे हो तो पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन होगा, और हम यहाँ पर पैरासिम्पथेटिक को ही एक्टिवेट करेंगे इस क्लास के अंदर. सो ANS की डिविजन्स हैं ये दोनों, पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक ANS, then parasympathetic ANS, right? Autonomic nervous system. Then अगर शेर आ गया, then sympathetic activation होगा, you will either fight with him or flight, भाग जाओगे. And resting situation के अंदर आपका GIT एक्टिवेट रहेगा, बट बेसिकली स्मूथ मसल्स एक्टिवेट रहेंगी. स्मूथ मसल्स एक्टिवेट का मतलब कि आपकी GIT बढ़िया तरीके से काम करेगी, आपका जो ब्रोंकस है वो कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी एज सच उनको कोई काम नहीं है तो वो भी ऐसी कैसी रहेंगी. देन आपकी जो आईज हैं वो भी डायलेटेड नहीं रहेंगी, कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी, राइट? बीपी कम रहेगा, राइट? एंड आईज का मैंने बात कर दी, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल रहेगा. देन डेफिकेशन और सारे के सारे रिफ्लेक्सेस सही काम करेंगे, बट इसके अंदर आपके डिफिकेशन रिफ्लेक्स आपको फील नहीं होगा, एंड बीपी बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, ब्रोंकस जो है वो डायलेट होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, राइट? एंड नाउ लेट्स डिस्कस द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से कि क्या होगा. वर्क्स टू सेव एनर्जी, बेसिकली एड्स इन डाइजेशन एंड सपोर्ट्स restorative resting body functions, and decrease the heart rate, increase the GIT tone, peristalsis, then urinary sphincter relaxation, and there will be vasodilation and decrease in the BP, right? Because as such देखो sympathetically हमें नहीं जा रहे हम, right? हमारे सामने ना तो हमें इससे फाइट करनी है ना हमें भागना है, तो why our blood vessels will constrict, right? vasoconstriction क्यों होगा, right? So that's why BP कम रहेगा, because there is no requirement of excessive oxygen supply or excessive nutrients, right? So जब our muscles don't need oxygen and nutrients, then blood vessels constrict क्यों होंगी, right?
एंड देन बॉडी रिस्पॉन्सेज जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट करेगा, रेस्टिंग सिचुएशन है, डाइजेशन अच्छे से होगा. देन डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन स्किन, डिक्रीजिंग इन द हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया and increased secretion of the digestive enzymes will be there. Constriction of the smooth muscles of bronchi, अभी कंस्ट्रिक्ट होगा राइट, बट सिंपैथेटिक के अंदर ये डायलेट होगा. डायलेट इसीलिए होगा बिकॉज इन सिंपैथेटिक यू नीड हाई ऑक्सीजन सप्लाई राइट. सो कई सारे मैंने लोग देखे हैं, दे जस्ट डोंट नो द फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सो दैट्स व्हाई मैंने बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है राइट. बिकॉज काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको समझ में नहीं आता, ये मतलब याद नहीं होता, बिकॉज मतलब फिजियोलॉजी से भी पढ़ते हुए आते हैं, फार्माकोलॉजी में भी सेम चीज़ पढ़ते हैं, बट आई डोंट नो. And then increase in the sweat glands, there will be cooling effect, contraction of the smooth muscles of the urinary bladder, contraction of the smooth muscles of the skeletal system, and then generation of the acetylcholine. So the acetylcholine is the only neurotransmitter, and how it is generated. So acetylcholine, so acetyl CoA is there, then choline comes, and हम मतलब उस बेस में नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. हम बेसिकली क्लिनिकली डिस्कस करेंगे चीज़ों को राइट. सो एसिटाइलकोलिन इज देयर, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज देयर, उसके साथ कोलिन मिलता है, देन व्हाट इज फॉर्म्ड, एसिटाइलकोलिन इज फॉर्म्ड. एसिटाइलकोलिन का एक्सोसाइटोसिस होता है, देन इट एक्ट्स ऑन रिसेप्टर्स. देन देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लॉकिंग एजेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेमीकोलिनियम. हेमीकोलिनियम, हेमी का मतलब इज 50%, कोलिनियम मतलब कोलिन राइट. सो हेमीकोलिनियम इज शोइंग दैट जहाँ से ये कोलिन आ रहा है ना, सो यहाँ से hemicolinium will block the entry of choline into the synaptic terminal right. So what will be happening, only 50% of choline will be entering, and thus जो acetylcholine का formation है that will be decreased right. So blocking agent का हमने बात कर ली hemicolinium की right. And then second is vesamicol, third is botulinum toxin, black widow spider toxin. So vesamicol कैसे act करता है, vesamicol. So guys, when this acetylcholine is generated, it goes into the vesicle. इस डायग्राम में शो नहीं हुआ हुआ, बट when this acetylcholine is generated, it enters to the vesicle, and then this vesicle का exocytosis होता है और acetylcholine बाहर आता है right. So acetylcholine comes into vesicle and vesamicol मतलब vesicle के अंदर नहीं जा पा रहा. So वेसामिकॉल इज द सब्सटेंस जो ब्लॉक करेगा एसिटाइलकोलिन को टू इन द एंट्री ऑफ वेसिकल राइट. एंड देन बॉटुलिनम टॉक्सिन, बॉटुलिनम टॉक्सिन बॉटल है तो बॉटल इसको ऐसे कवर कर लेगी. सो एसिटाइलकोलिन रिलीज तो होगा, बट वो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल तक नहीं जा पाएगा एंड वो यहीं रह जाएगा, रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं कर पाएगा राइट. एंड देन ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन एक्ट्स सेम एज बॉटुलिनम टॉक्सिन राइट. सो हेमिकोलिनियम, वेसामिकॉल, बॉटुलिनम टॉक्सिन, ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन की हमने बात कर ली राइट. सो हेमिकोलिनियम इज द सब्सटेंस दैट विल बी causing, that will be acting on the choline entry, और वो 50% ही choline को एंट्री देगा. सो एसिटाइलकोलिन जो फॉर्म होगा वो कम होगा राइट. हेमिकोलिनियम. वेसामिकॉल एज द नेम सजेस्ट, वेसल में एंट्री नहीं होने देगा एसिटाइलकोलिन की, एंड वेसिकल के अंदर एंट्री नहीं होगी. देन हाउ एक्सोसाइटोसिस विल बी परफॉर्म्ड एंड हाउ दिस एसिटाइलकोलिन विल रीच टू द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल राइट. एंड देन थर्ड चीज है हमारा बॉटुलिनम टॉक्सिन. बॉटुलिनम टॉक्सिन एज द नेम सजेस्ट बॉटल. सो ये बॉटल की तरह इसको ऐसे कवर कर लेगा और it will not let the acetylcholine to act on the postsynaptic terminal on the receptors. So that's why it acts like that. So our black widow spider toxin भी same इसी की तरह act करेगा right. Hey, did you yourself crack NEET PG? No, I am a MBBS student. Till now I have not cracked NEET PG exam. So now comes Colino receptor. So we have discussed about acetylcholine, its formation and its blocking agents or blocking
substances that will be decreasing the amount of ACH, right? Then हमने ये बात कर ली, but we have till now we have not discussed that how the acetylcholine will go to the post synaptic terminal and how it performs its action. So on post synaptic terminal there are receptors, and as they are activated by acetylcholine, so they are called as Colino receptors, right? Colino receptors. So they are of two types, right? Nicotinic and muscarinic. So Colino receptors first की बात करते हैं, that is M. So muscarinic and nicotinic, there are two types. Muscarinic are of 5 types: M1, M2, M3, M4 and M5. M4 and M5 are not so important. M1, M2 and M3 are important. M1, they are on the secretory glands, basically on the stomach, right? And on the stimulation or after the stimulation of M1, we can see salivation, stomach acid increase ho jana, lacrimation and sweating, right? So M1 will be stimulating the salivation, increase in the gastric acid, sweating and lacrimation. M2 is present on the heart, right? M2 is present on the heart and it will be causing the bradycardia, right? यहाँ पर वी आर इंक्रीजिंग पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, राइट? सो ये चीज़ याद रखना, सिक्रीटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा तो अल्टीमेटली पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ही बढ़ेगी. देयर इज इंक्रीज सेलिवेशन, इंक्रीज स्टमक एसिड, इंक्रीज डाइजेशन, इंक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज लैक्रिमेशन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड देन M3 स्मूथ मसल्स पे होता है एंड इट विल बी contracting the smooth muscles and it will be causing bronchospasm, urination and diarrhea, right? Then M3 is also present on pupil and ciliary muscles and it will be contracting the pupil and thus causing the meiosis, right? And increased flow of the aqueous humor, right? And then NM, nicotinic M type, is on muscle, M muscle end plate, right? Skeletal muscle end plate, and it will be causing the contraction of skeletal muscle. Then N is present on the autonomic ganglia and adrenal medulla, right? And it will be stimulating the secretion of epinephrine and controls the ANS, right? So we have talked about the 5 types of receptor, 5 subunits of receptors, and mainly there are of 2 types, muscarinic and nicotinic. Muscarinic are of further 5 types, but we will be studying only 3, M1, M2 and M3. M4 and M5 are not so much important and वो ज़्यादा locations पर होते भी नहीं हैं. Nicotinic are of 2 types, NM and NN, right? M1 is present on near stomach, right? Secretory glands and all of that. M2 is present on heart. M3 is present on the muscles and it will be contracting the muscles. So if we talk about the GI muscles, then it will be contracting the GI muscles, and अगर bronchus की बात करें, it is also a smooth muscle, so it will be causing bronchospasm. And pupil की बात करें, then it will be causing contraction, constriction of pupil, right? Then NM, M means muscle, so it will be present on skeletal muscle end plate, and N autonomic ganglia and adrenal medulla. So we have already seen the functions of these receptors, and now comes the cholinergic drugs. So cholinergic drugs are also called as parasympathomimetic drugs. So these are the drugs that are mimicking the parasympathetic action, that are increasing the parasympathetic action, right? So these are the drugs that are increasing the parasympathetic activity, and they are often called as parasympathomimetic drugs because of their action mimics the action of parasympathetic nervous system, right? And
also called as cholinomimetic, because as such they are increasing due to the stimulation of acetylcholine, right? Just see that how the live chat is going on. Wait a second, few more seconds, guys. Wait. Yeah. So they stimulate the parasympathetic nervous system in the same manner as acetylcholine, and initially हम acetylcholine के analogs की ही बात करेंगे. So the brother and sister of acetylcholine. So they may stimulate the cholinergic receptors directly, or the slow acetylcholine, or they inhibit the acetylcholine metabolism at synapses and affect the enzyme cholinesterase. So I have not discussed the enzyme that is acetylcholine esterase. So guys, what is happening here? Acetylcholine आया, it will be metabolized by acetylcholine esterase, and the quantity of the acetylcholine will be decreased, right? So how we can increase the acetylcholine? We can give acetylcholine analogs, or we can inhibit its metabolism, right? So cholinergic agonists are of two types, direct and indirect initially. Then they are of basically cholinergic agonists that are direct, and indirect का मतलब that will be inhibiting the choline esterase. और choline esterase अगर inhibit करेंगे, then what will happen? Then acetylcholine का metabolism will be decreased, and thus the amount of acetylcholine will be increased, right? Cholinergic agonist. So first is choline esters. So choline esters, acetylcholine, methacholine, carbachol, bithanecol. So these all are the esters that are bhai or brother and sister of acetylcholine. And then we are having few alkaloids, so that are analog. First is muscarine, pilocarpine, arecoline. Muscarine is not used, arecoline is also not used, because they are derived from mushrooms and betel nut, and they are poisonous and they are not used. Pilocarpine is readily used, right? And then anticholinesterase की अगर मैं बात करूँ, so these are the metabolizing inhibitors, and they are of two types, reversible and irreversible. Reversible are the drugs that we use, but irreversible we don't use. They generally cause toxicities, right? And they can cause OP poisonings, right? Organophosphates poisoning. So organophosphates are the readily compound that is present in the fertilizers, home cleaners, toilet cleaners, and all of that. So we have talked about the choline esters, then alkaloids. Then अब बात करते हैं एंटी कोलिन एस्टरेज दैट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. सो रिवर्सिबल के अंदर द इम्पोर्टेंट group is carbamates, that is physostigmine, neostigmine, pyridostigmine, edrophonium, rivastigmine, donepezil, and galantamine. So physostigmine, neostigmine, pyridostigmine, edrophonium, rivastigmine, donepezil, galantamine. These are the reversible carbamates, and these are the drugs that we use, right? Then we have tacrine as well. Then irreversible mein we are having again carbamates, that is carbaryl and propaxar. And propaxar is a insecticide,
एंड इट कम्स अंडर द नेम ऑफ बेगॉन. एंड आपने बेगॉन स्प्रेज भी पहले आते थे, तो वो भी अगर देखे हो. देन वेट अ सेकेंड गाइज, लैपटॉप बंद हो सकता है, पता नहीं व्हाई इट इज नॉट चार्ज्ड. वेट अ सेकेंड. Now it's fine. Yeah, now it's fine. So anticholinesterase में reversible and irreversible. Reversible are physostigmine, neostigmine, pyridostigmine, edrophonium, rivastigmine, donepezil, and galantamine. And irreversible में carbaryl, propaxar, then OP poisoning, that the drugs that can cause OP poisonings, that are diflos, ecothiopate, malathion, diazion, tabun, sarin, soman. So guys, these are generally suicidal drugs, suicidal agents, right? And patient come with suicidal tendencies. मतलब जो भी organophosphate poisoning लेके आता है वो generally suicidal टेंडेंसी के साथ ही आता है, और सुसाइडल टेंडेंसी के साथ ही वो काफ़ी सारी अमाउंट में इंसेक्टिसाइड या ऐसा कुछ होम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ऐसा कुछ इंजेस्ट करके आता है, राइट. उसकी बात करेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कैसे करना है. बट फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. सो दे एक्ट बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू द कोलिनो रिसेप्टर्स, एंड direct acting cholinergics are lipid soluble. They do not readily enter the CNS, so effects are generally peripheral and resistant to metabolism by acetylcholine esterase, and effects are longer acting than with acetylcholine. So the agonists that we are having is acetylcholine, methacholine, carbachol and bethanechol, right. And then we are having muscarine, pilocarpine and aragoline. These two are not used. Pilocarpine is used as a topical eye drops के लिए. Then drug effects on cholinergic agent. So cardiovascular effect का क्या आती है? There is decreased heart rate. Then vasodilation is also there. Because cholinergic agents can cause bradycardia, so thus they are causing bradycardia and vasodilation. They stimulate the intestine and bladder. They increase the gastric secretion, they increase the GI motility, they increase the urinary frequency, right. So when we are blocking these things, then patient will feel urinary retention generally. So side effect की अगर मैं बात करूँ तो cholinergic blockers की side effects urinary retention, dry mouth, because secretion block हो जाएगा, dry mouth, urinary retention, these two are common side effect, right. And ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? Why it is not? Yeah. So now the drugs, now on the pupil, it will be causing constriction of pupil, that is meiosis, and spasm of accommodation, and reduced intraocular pressure. So on pupil, it will be constricting the meiosis and spasm of accommodation, and they will be reducing the intraocular pressure. Because they will be increasing the outflow of aqueous humor. And respiratory effects के अंदर bronchial constriction, narrowed airways, because you all know that we don't need any excessive amount of O2, so that's why they will be causing bronchial constriction. Then increased salivation and sweating. एंड जब भी हम एक कोलिनर्जिक ब्लॉकर देंगे, देन सारे के सारे इफेक्ट्स उल्टे हो जाएंगे. पेशेंट विल बी हैविंग टैकीकार्डिया, patient will be having urinary retention, patient will be having dilatation of pupil, then patient would be having dry mouth and all of that. So side effects की भी बात हमने साथ साथ कर ली, right. और अगर मैं बात करूँ यहीं पर अगर ओपी पॉइजनिंग के केसेस के अंदर, तो ओपी पॉइजनिंग के अंदर ऑल द थिंग्स विल बी एग्रेवेटेड. सो देयर विल बी सीवियर ब्रेडिकार्डिया, देयर विल बी सीवियर ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, देयर विल बी इंक्रीज्ड सलाइवेशन, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, इंक्रीज्ड लैक्राइमेशन, सिक्रीशन विल बी इंक्रीज्ड,
GIT की मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा, बहुत ही ज़्यादा दिखेगा, स्पैजम ऑफ एकोमोडेशन, देन राइट। ओपी पॉइजनिंग के अंदर ये सारे इफेक्ट्स एनहांस हो जाएंगे, साइड इफेक्ट के अंदर ये सारे इफेक्ट्स अपोजिट हो जाएंगे, राइट। Then drugs affecting the cholinergic system. So there is a mnemonic: many smart ladies ultimately bring disaster for dudes. So MSLUBDD, many smart ladies ultimately bring disaster for dudes. First is meiosis, salivation, lacrimation, urination, bronchoconstriction, defecation, decrease heart rate. So these are all the functions or actions of the cholinergic agents. And constriction of pupil, salivation, increase lacrimation, increase secretion, urination, bronchoconstriction, defecation reflex, decreased heart rate. And if we talk about the side effect, then mydriasis will be there, decreased salivation or dry mouth will be there, decreased lacrimation will be there, urinary retention will be there, bronchodilation will be there, no defecation reflex or constipation will be there, then tachycardia will be there. And अगर हम यहीं पर ओपी पॉइजनिंग की बात करें, ओपी पॉइजनिंग मतलब कि इंक्रीज, बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंक्रीज हो चुका है एसिटाइलकोलिन, तो ओपी पॉइजनिंग के अंदर देयर विल बी meiosis, high grade meiosis, very increase in salivation, very increase in lacrimation, and very much increase in secretions, all other secretions, right. यूरिनेशन भी बढ़ जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी सीवियर हो जाएगा, राइट। एंड अगर प्री डिस्पोजिशन COPD पेशेंट को है, अस्थमा है, देन क्राइसिस में जा सकता है पेशेंट, एसिडोसिस में जा सकता है। एंड डिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, सीवियर ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा पेशेंट। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. These are the actions, normal actions of the cholinergic system, that is meiosis, salivation, lacrimation, urination, bronchoconstriction, defecation, decreased heart rate. And the side effects are mydriasis, decreased salivation, decreased lacrimation or decreased salivation मतलब dry mouth, urinary retention, bronchodilation, defecation, reflex का abolition हो जाना, और constipation and tachycardia. Then OP poisoning के केस में जो ये actions हैं, they will be aggressive. First will be high grade meiosis, then seriously really increase in salivation, lacrimation and all other secretions, then urination बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, defecation बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, bronchoconstriction high grade का हो जाना, then very decrease in heart rate, और very severe bradycardia. And now let's talk about the acetylcholine. That is, acetylcholine is the one of the main neurotransmitters of the ANS, and this is the only neurotransmitter जो कि parasympathetic को संभालता है, right? Acetylcholine is released at preganglionic fibers of both sympathetic and parasympathetic nervous system, also released from postganglionic sympathetic neurons, and that innervate the sweat glands from the motor neurons that innervate the skeletal muscles. So these are also released from postganglionic sympathetic neurons, right, that innervate the sweat glands from the motor neurons, and so basically they are released from postganglionic fibers and motor neurons. postganglionic fibers जो कि innervate करते हैं sweat glands को, और motor neurons जो कि innervate करते हैं skeletal muscles को. And it is quaternary ammonium compound, so cannot penetrate the membranes, and it does not have any therapeutic importance because rapid inactivation by acetylcholine esterases is there. So acetylcholine बाहर आता है and ACH gets metabolized, degrade हो जाता है with the help of acetylcholine esterase. So if we want to increase, तो हम acetylcholine के analog दे सकते हैं, और we can block the metabolism by giving the physostigmine like drugs, right, anticholinesterases. It has both muscarinic and nicotinic receptors or actions, right.
it acts on muscarinic and nicotinic receptors, so it will be producing the muscarinic and nicotinic both actions. Then now comes bethanechol, not hydrolyzed by acetylcholine esterase, and actions that are produced directly stimulate the M receptors, causing increased intestinal motility and tone. So bethanechol, no, not hydrolyzed by acetylcholine esterase like earlier of the acetylcholine. Then actions that it produces, it directly stimulates the M receptors that cause the increased intestinal motility and tone. So ठीक है, it stimulates the detrusor muscle of the bladder while trigon and sphincters are relaxed, causing the expulsion of the urine. Right, ये चीज समझने की है. It stimulates the detrusor muscle of the bladder. Detrusor muscle is this muscle, but जो trigon है that is present here. So we want to relax this trigon. Right, अगर ये ट्राइगॉन रिलैक्स नहीं हुआ, कंस्ट्रिक्टेड रहा, if this is constricted then urine cannot come out, right? So this should be relaxed अगर हमें यूरिन बाहर आना है तो, राइट? सो ये रिलैक्स होना चाहिए और ये कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए. अगर ये दोनों कंस्ट्रिक्ट हो गए then also patient will be feeling urinary retention, right? Therapeutic uses of bethanechol is there in paralytic ileus, urinary retention, and generally post-OP urinary retention. Then it is helpful in post-surgical atonia of the bladder and the GI tract, like I have told you, right? And then pilocarpine, that is the drug, that is the substance that is used. It is an alkaloid, lipid soluble, and it is stable to hydrolysis by choline esterase. And actions, it is locally or topically applied to cornea, and it produces the rapid meiosis and the contraction of ciliary muscles, and thus it produces the spasm of accommodation, but it is helpful in the treatment of glaucoma. And vision is fixed at the particular distance, or making it impossible for focus for far situated objects, and it is useful in glaucoma as it opens the trabecular meshwork around the Schlemm's canal, and it causes the drainage of the aqueous humor, so it is beneficial in glaucoma. And IOP immediately decreases, right? Then now comes indirect acting cholinergic agonists that act through inhibition of the acetylcholine esterase enzyme, so increase the acetylcholine level in the synapse. So there is an accumulation of the acetylcholine then occurs, which enhances the activation of the nicotinic and muscarinic receptors. And acetylcholine esterase drugs are either reversible or irreversible inhibitors of the acetylcholine esterase, right? So now comes the reversible and irreversible. Reversible that we use, that is neostigmine, physostigmine, pyridostigmine, edrophonium, tacrine, donepezil, and rivastigmine is missing here. So neostigmine is used in myasthenia gravis, rivastigmine is used in Alzheimer's, physostigmine is like the neostigmine, and pyridostigmine is more potent than neostigmine, right? And ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहती है, so we need less doses of pyridostigmine if we compare it to the neostigmine, right? Then irreversible, that can cause the OP poisonings. It is diflos, parathion, tabun, serine, and carbamates के अंदर carbaryl, right? And now comes the physostigmine. It is the only cholinesterase capable of crossing the blood-brain barrier because it is lipid soluble. It is lipid soluble, but जो neostigmine है, that is water soluble. So as such, physostigmine is the only drug that can cross the blood-brain barrier, and neostigmine cannot, so it cannot cross the blood-brain barrier, right? Now let's move further, and and is more lipid soluble, so used as an antidote for the overdosage for anticholinergics such as atropine, antihistaminics, TCAs, phenothiazines, and may also be used in the treatment of glaucoma, right? Pyridostigmine की अगर मैं बात करूँ, then it is the maintenance drug of choice for parents with myasthenia gravis. So
फाइसोस्टिगमिन की बात कर ली, पायरिडोस्टिगमिन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग, राइट. सो जनरली माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर वी यूज neostigmin, but neostigmin needs a frequent dosing after 6 hours, but as such this is not the problem with pyridostigmin, right. And neostigmin, prototype anticholinesterase agent that is used for the long term treatment for myasthenia gravis as an antidote for tibocurarine and other non depolarizing agents in the surgery. Neostigmin is really important drug, right. Then donepezil, it is used in the treatment of mild to moderate Alzheimer's disease and helps to increase the maintain memory and learning capabilities like rivastigmine, right. And now uses of the indirect cholinergic agonist. So basically we use these things only, right. We use indirect cholinergic agonist only. We generally don't use the direct ones, right. So they are more useful than direct, right. So these are useful in glaucoma, and the drugs that are useful in pilocarpine and physostigmine, edrophonium to test the myasthenia gravis, and neostigmine and pyridostigmine in the treatment of myasthenia gravis. Neostigmine needs frequent dosing, pyridostigmine needs one dose or OD dosing, right, one dose per day. And neostigmine is also used in post-operative paralytic ileus, and neostigmine is also used in post-operative decurarization. So guys, sometimes there are conditions ki जब एब्डोमिनल सर्जरीज होती है ना, तो हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, GIT मसल्स हैं या ब्लैडर की मसल्स हैं, तो वो कॉन्शियस हो जाती हैं एक तरीके से, और वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, राइट. दे काइंड ऑफ पैरालाइज्ड कह सकते हो उनको. सो हमें इसको रिवर्स करना होता है. सो दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एज पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, राइट, पोस्ट ऑप यूरिनरी रिटेंशन. So to reverse these things, we can give neostigmine, right. We are building acetylcholine again in the muscle so that उसकी tone वापस आ जाए, right. Then edrophonium is useful in cobra bite as well. So guys, cobra bite के अंदर सबसे पहले तो anti-venom serum is needed. Anti-venom serum, you have to give anti-venom serum, right. Then you have to give edrophonium, or you can give neostigmine as well, right. Because neostigmine will increase the acetylcholine and thus it will prevent the respiratory to paralyze, right, respiratory muscles to paralyze. Atropine poisoning अगर है, then if you want to reverse the atropine poisoning, then again physostigmine is there. It antagonizes both central and peripheral effects. Then Alzheimer's disease के अंदर donepezil, galantamine, tacrine and rivastigmine. And TCAs, phenothiazine की overdosage में you have to give physostigmine. So TCAs इनकी क्या है, ये potent anticholinergic action भी show करते हैं. So to reverse the anticholinergic side effects, we have to give physostigmine, right. So we have discussed the uses or the indications. First is glaucoma, then edrophonium test, then myasthenia gravis, then post-operative paralytic ileus, post-operative urinary retention, post-operative decurarization, cobra bite, atropine poisoning, Alzheimer's disease. We use rivastigmine generally, donepezil, galantamine, tacrine and rivastigmine. Then in TCAs, phenothiazines, their action, तो इनका second action होता है, they are potent anticholinergic drugs. So because of this anticholinergic action, they produces their side effects, and because of this side effect, patient gets irritated. So to reverse this side effect, you have to give physostigmine, right. And then Colinergic agents के साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं. सो साइड इफेक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक. सो कार्डियोवैस्कुलर अगर हम देंगे
so the drugs that will be given at high doses like OP poisoning के जो भी effects हैं वो सब आएंगे. Bradycardia, hypotension, conduction abnormalities, headache, dizziness, convulsions, abdominal cramps, then increased secretions, nausea, vomiting, and then respiratory per increased bronchial secretion, spasm. So it is talking about elevated effects when OP poisoning is there. Lacrimation, sweating, salivation, loss of binocular accommodation, and meiosis. Now this is the patient of OP poisoning. बहुत ही ज़्यादा सिक्रीशंस हो रहे होते हैं. आई हैव सीन अ पेशेंट, राइट, तो बहुत ही ज़्यादा सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं. लैक्राइमेशन बढ़ जाता है, सेलाइवेशन बढ़ जाता है, कॉन्स्टेंटली स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा. ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन में भी जा सकता है पेशेंट. देयर इज एक्सेसिव स्वेटिंग, मेयोसिस, bronchospasm, then bradycardia, hypotension, and increased salivation, lacrimation, प्लस यूरिनरी भी बढ़ जाता है और डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस भी बढ़ जाते हैं, राइट. And acute toxic effects of irreversible cholinesterase poisoning, so they are lipid soluble, so they can enter the body in the eye, skin, respiratory system, GIT, and organophosphate insecticide like malathion, parathion, or nerve gases, sarin, tabunsoman, they can cause these things, and these agents can cause excessive cholinergic stimulation, muscarinic and neuromuscular blockade. And then cholinergic crisis occurs because the irreversible anticholinesterase poison binds to the enzyme acetylcholine esterase and inactivates it. Thus, acetylcholine remains in the cholinergic synapses, causing the excessive stimulation of muscarinic and nicotinic receptors. And because of this excessive stimulation, सारे के सारे जो parasympathetic activities हैं, actions हैं, वो सब बढ़ जाते हैं. And now the treatment, first of all, decontamination of the clothing, because highly lipid soluble है, तो they can absorb from skin as well, right? So you have to first of all decontamination of the clothing, then flushing poison from the skin and eyes, then activated charcoal and gastric lavage, then you have to start the atropine. 2 mg IV after every 10 minutes till the pupil dilates. Ideally pupil constricted रहेगा OP poisoning का, right? राइट. और आपको मॉर्फिन पॉइजनिंग है तो कैसे पता चलेगा? पिन पॉइंट प्यूपिल, राइट. सो ओपी पॉइजनिंग के अंदर भी कंस्ट्रिक्ट रहेगा, बट पिन पॉइंट प्यूपिल नहीं बोला. मॉर्फिन के अंदर आपको पिन पॉइंट प्यूपिल बोलना है, बिकॉज पिन पॉइंट प्यूपिल दिखता है, बट एज सच ओपी पॉइजनिंग में पिन पॉइंट प्यूपिल नहीं दिखता. Then atropine to counteract the muscarinic effect, 2 mg IV every 10 minutes till pupil dilates, and maximum you can give 50 to 100 mg. So आप तब तक एट्रोपिन दोगे जब तक रिवर्स नहीं हो जाता इसका एक्शन ओपी पॉइजनिंग का. Then to relieve the neuromuscular blockade by nicotinic effects, give pralidoxime. So oximes देने आपको, oximes cholinesterase reactivator. So this is a cholinesterase reactivator. So these drugs will be reactivating the cholinesterase metabolizing enzyme. Pralidoxime causes the anticholinesterase poison to release the enzyme acetylcholinesterase, and give pralidoxime as soon as possible, as if too much time passes the poison bond becomes strong and irreversible. So immediately you have to give pralidoxime as well. और अगर नहीं दिया तो ये strong जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, irreversible हो जाएगा, and then आपको एट्रोपिन देकर ही पेशेंट को सेव करना पड़ेगा, right? And then other oximes are also there, obedoxime, diacetyl monoxime, and yeah, we have completed the cholinergic system. So let's just revise the things. बहुत जल्दी रिवीजन एक बार कर लेते हैं, एंड उसके बाद we'll be meeting in the evening and we will be discussing anticholinergic system, right? So इनिशियली हमने जब स्टार्ट करा था तो हमने 2 टाइप के सिस्टम डिस्कस करे हैं दैट आर अ पार्ट ऑफ ANS. सो दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सो हमने एक्शन डिस्कस कर लिए. पैरासिम्पैथेटिक के अंदर इट वर्क्स टू सेव एनर्जी, एड्स इन डाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, डिक्रीज हार्ट रेट, GI ट्रैक्ट, टोन डिक्रीज हो जाना, पेरिस्टालसिस,
right? Then body responses, body responses जाते हैं और rest और digest जाते हैं. Dilatation of the blood vessels in the skin, decrease heart rate, increase secretion of the digestive enzymes, constriction of the smooth muscles, then increase in the sweat glands, then contraction of the smooth muscles of the urinary bladder as well, contraction of the smooth muscle of the skeletal muscles. Then we have discussed the acetylcholine formation, and then the blocking agents that are hemicolinium, vesamicol, botulinum toxin, black widow spider toxin. Hemicolinium blocks the entry of choline. Vesamicol blocks the entry of acetylcholine into the vesicle. Botulinum toxin inhibits the acetylcholine to act on the postsynaptic terminal. Black widow spider toxin acts like botulinum toxin, right? And then Colino receptors, they are of two types, N and M, nicotinic and muscarinic. M are of 5 types, M4 and M5 are not used. M1, M2 and M3. M1 is present on secretory glands, M2 is present on heart, and M3 smooth muscles. And basically, right, smooth muscles. And secretory glands की वजह से it will be increasing the secretions. हार्ट पे है तो ब्रेडिकार्डिया, स्मूथ मसल्स पे है तो कॉन्ट्रैक्शन, राइट. NM is present on muscle end plate, and N is present on autonomic ganglion and renal medulla. Now we have discussed the drugs, direct and indirect, and anticholinesterase. So there are cholinesters that are bhai bandhu of acetylcholine, that is methacholine, carbachol, bethanechol. And there are alkaloids, 3-drug, muscarine, pilocarpine, arecholine. Muscarine and arecholine are not used because they are produced from poisonous mushrooms and betel nut. Betel nut is also called as supari in Hindi, and pilocarpine is used topically for the eye drops, right, for treating glaucoma. And anticholinesterase के अंदर reversible are there physostigmine, neostigmine, pyridostigmine, edrophonium, rivastigmine, donepezil, galantamine. Physostigmine is readily used in glaucoma, neostigmine myasthenia gravis, pyridostigmine myasthenia gravis. Edrophonium is used for edrophonium test and cobra bite, but initially we use neostigmine only. Then rivastigmine is used in Alzheimer's, donepezil is also used in Alzheimer. And then then carbamates are irreversible organophosphatase, they can cause OP poisoning, and OP poisoning के symptoms, they are excessively parasympathetic symptoms, right. And हमने ये सब तो बात कर ली थी, and actions हम डिस्कस कर चुके हैं. फटाफट से हम इस क्लास को एंड कर देते हैं, and we will be meeting soon, I think 5 PM per. And if you want to buy the subscription, then you can use code VIRMANI Virmani, and you will be getting 10% off. And thank you so much. like कर दो वीडियो को, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दो. And bye guys, take care, stay healthy, stay safe, stay positive, and keep fighting for your goals. And we will be meeting soon. And bye, take care.